Hello everyone, and welcome to another streaming session with me. कुछ देर में शुरू करते हैं. Just give me like 5 to 10 minutes and we'll get started. आज हम साइज को बढ़ाने पे फोकस करेंगे. If we get a winning trade, we'll try to increase the size on that particular winning trade. Okay, so stay tuned for that and let's get started. Let me just set up the camera. Hello everyone. Just give me a minute. I'm trying to set up the stream and we'll get started. Hello. Hello everyone and welcome to on the stream. Just give me one more minute and we'll be started. Okay. Hello.
hello. What's up, Ansh? How are you? कैसा जा रहा है ये वाला month so far? How many trades you did? That's amazing. Hopefully कल सारे लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो. सैटरडे के दिन हमने लाइव प्रैक्टिस की थी. उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ डू वी इंक्रीज साइज इन आवर ट्रेडिंग पोजीशन. तो इफ़ यू हैव सीन इट, प्लीज़ गिव द स्ट्रीम अ लाइक. तो आज देखते हैं क्या होने वाला है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ से शुरू करते हैं. Okay. Hello everyone, and welcome to another stream. Today is Monday, 26th of February. That's amazing, Ansh. So today is 26th of February, and we are trying to catch some pips today. And welcome to the stream. And yeah, and if you haven't subscribed to this channel yet, please consider subscribing to this channel. And we'll get started with our top-down analysis in about 3 minutes once this candle closes right here, which is the current candle on 30-minute chart. Okay, so once this candle closes, we'll start doing our top-down analysis as just as we do. So we'll see where can market push. Over the news, we don't have really news today, but this week check करते हैं. First of all, आज तो नहीं है, but कल we have news at 7, which is ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ वाला रिकॉर्ड है. एंड उसके बाद 8:30 को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है. देन ऑन वेडनेसडे वी हैव जीडीपी डाटा. उसके बाद थर्सडे वी हैव अगेन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स. देन हमारा मार्च शुरू हो जाएगा फ्राइडे के दिन, एंड फ्राइडे के दिन वी हैव पीएमआई. Alright, so these are all the datas that we will have this week. Alright, तो शुरू करते हैं. अबाउट 1 मिनट बचा है हमारे कैंडल को क्लोज होने पे, तो उसके बाद विल जस्ट गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो राइट नाउ वी आर लुकिंग एट डेली, एंड प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द स्ट्रीम. एंड अगर तुमने अब तक मेरा रिसेंट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कंसिडर वॉचिंग दैट. And we'll just get started in 5, 4, 3, 2, 1. Alright, so hello everyone. Today is Monday, 26th of February, and we are doing right now top down analysis on EURUSD and a trade write up on our EURUSD. उसके पहले yesterday on Saturday we playbooked the trade. इस पर मैंने सारा वीडियो बना के रखा है, तो अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो. बेसिकली वी प्लेबुक की हाउ वी कैन इंक्रीज द साइज इन आवर ट्रेड. ओके, लेट मी जस्ट रीलोड दिस. एंड उसका मैंने जो प्लेबुक है वो भी शेयर किया है. दिस वन राइट हेयर, adding to a winning position, was the title of our stream yesterday. And basically this is the research we did yesterday, and today we are going to execute it. So let's just see how this one's going to play out, if we see any winning positions today. Okay, so let's get started. Right now only one people is watching us right now, so yeah, let's set a record for 15 people watching us live today. Okay,
So let's get started, everyone. First of all, 12:30 has been happened and we are officially in pre-London right now. तो टॉप डाउन एनालिसिस करना शुरू करते हैं. वीकली से शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वीकली अगेन seems to be bearish and we have formed this support right here and we have a most recent resistance right here. Okay, इसे further break down करेंगे डेली में and then you will see कि we have a most recent support made right here and we have a most recent resistance made right here. इसे further break down करेंगे 4 घंटे के चार्ट में. तो you will see कि we have created some kind of resistance right there and a support right there. Okay, तो ओवरऑल 4 आवर में देखा कि मार्केट इज रेंजिंग pretty badly and ओवरऑल अगर देखा जाए तो it seems like bearish. Market seems to be bearish on 4 hour but we need additional confirmations. Alright, इसे further break down करेंगे 1 hour के चार्ट में. हेलो चिकपी, हाउ आर यू. तो इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 1 घंटे के चार्ट में एंड यू विल सी वी हैव क्रिएटेड this support right here and this can be our target for today if we decided to go buy, and this is our official support on 1 hour chart. On 30-minute chart इसे further break down करेंगे तो you will see कि we have formed a recent resistance right here and although this candle is pretty small but I think we can consider this as a resistance. So let's just see what happens. Okay, so about our selling level, I can mark this as my sell below level. All right, there you go, extended. And above buy side, I'm not really sure how this is going to play out. I have a strong urge to consider this one right here as my high, but I don't think I should. We'll see, because 1 hour mein market seems to be, although 1 hour market seems to be bullish, but if you look at 4 hour chart, market seems to be bearish, and on daily market is bullish. So there are lot of things which are like match नहीं हो रही एक दूसरे से. So that's why I don't think so कि we are going to be taking that until we see enough confirmations. Alright, so what I want from 30-minute chart is to create some kind of resistance right here, and if this resistance break then we'll only take buy trades till this point right here. Okay, so even though we can make like an aggressive entry right here at this point, but I don't see that as like a good opportunity to take a buy. So the best thing will be right now is just to wait patiently and wait for some kind of setup to be formed, because as you see on daily market seems to be bullish, but on 4 hour it is kind of contradictory. So let's just wait for some kind of resistance to be formed, and if this resistance start to break we'll take a trade towards buy side. ठीक है, तो इसे further break down करने की तो ज़रूरत नहीं है. We have created already a resistance we have created. So let's just see, let's just do our trade right up. First of all, we are going to look at our news today if we have any news. So news wise we don't have any news really today. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ which is none. And previous day अगर देखा जाए तो previous day was kind of previous day was bearish but choppy. So there is a certainty, there is uncertainty. Previous day was bearish and choppy, so there is a lot of uncertainty. Okay, so basically market में काफ़ी uncertainty है because market is in range right now on daily. If you see, we still have this area to capture right here as our target. So on daily market seems to be bullish, but if we look 4 hour chart, it is telling a totally different picture. It is telling me to go short. ठीक है, basically it is telling me to take a sell position on 4 hour chart. On 1 hour chart it is telling a different story again. So there is not really confirmation at the point, so we are just going to be waiting till London open and see if we get any kind of confirmations.
तो आज का एनालिसिस लिख लेते हैं ऑन फॉर टुडे 4 आवर अगेन 4 आवर सीम्स टू बी बेयरिश ओके तो मैं वही मेंशन कर लूँगा ओके तो 4 आवर सीम्स टू बी बेयरिश and we have created a resistance at 83.69 and current PA seems like a pullback. Alright, तो बेसिकली मैंने यही लिखा है कि ऑन 4 आवर मार्केट seems to be bearish as well and this two candles right here seems like some kind of pullback into the zone. Okay, इसे further break down करेंगे तो what you will see कि we have created a support at 81.96. We have created support at 81.96, break and test of same shall push price down. Okay, so this is our analysis for the bear side. For the bull side, looking for a fresh resistance to be formed to take buy decisions. All right, so to conclude, what's up Akash? To conclude, looking for a fresh resistance to be formed. Okay, so basically there is nothing at the moment in the market. Seems to be going bullish and we might have taken the trade right here when this area start to break, but of course we just getting started with the top down analysis, so let's just not panic here and wait for what's to come today. So again there is no setup today. आकाश का क्वेश्चन है कि आज कवर होगा. वेल वी डोंट नो कि आज क्या होगा. वी डोंट नो, हो सकता है हमारा अगेन लॉस हो जाए, तो टेक ट्रेड्स बेस्ड अपॉन योर रिस्क. ओके, वी आर टोटली अनश्योर कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द मार्केट बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन, जो हमारा फर्स्ट रूल है. ठीक है, तो देयर यू गो. उसके बाद हमारे रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो तुम किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम अपने रिस्क को पॉइंट में रखो एंड अपने रिस्क को एक्सेप्ट करो. टोटली भाई चलेगा. तो या व्हाट आई वाज सेइंग कि ओके, तो हमारे रूल्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, anything can happen in the market and there is no certainty in the market. The only certainty market gives you is when we are following our probabilities, we are following our edge. ओके, उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड रूल है वो है देयर इज़ नो फिक्स आउटकम टू एनी ट्रेड. मतलब किसी भी ट्रेड का कोई फिक्स आउटकम नहीं होता. किसी भी ट्रेड के लॉस में जाने के चांस उतने ही होते हैं जितना उसके विन में जाने के चांस होते हैं. ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है कि ऑलवेज स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ आवर एज. बेसिकली ओके, तो कहाँ था मैं. ओके, तो ऑलवेज स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ द एज. बेसिकली जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है उससे स्टिक रहो एंड मेक श्योर कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी से स्टिक हो. ओके, उसके बाद हमारा जो फोर्थ रूल है, द मोर यू लूज प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इंक्रीजेस. बेसिकली जितनी अगर तुम एक लूजिंग स्ट्रिक में हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू फाइंडिंग अ विनिंग ट्रेड बेसिकली इंक्रीजेस इज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटीज. ओके,
उसके बाद अगेन हमारा जो फिफ्थ रूल है वो है कि अगर प्री लंदन सेशन में हमें ट्रेड नहीं मिलती तो हमें लंदन सेशन में ट्रेड मिलेगी, एंड अगर लंदन सेशन में ट्रेड नहीं मिलती तो हमें पोस्ट लंदन में ट्रेड मिलेगी, और अगर पोस्ट लंदन में ट्रेड नहीं मिलती तो हमें न्यूयॉर्क पे ट्रेड मिलेगी, एंड वाइस वर्सा। ओके, एंड उसके बाद वी हैव अ सिक्स्थ रूल, वी हैव टू ट्रेड इन द नाउ मोमेंट। जो भी ट्रेड हम लेते हैं वो करंट मोमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, रेदर देन थिंकिंग अबाउट द पास्ट। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें पास्ट में लॉस हुआ है तो वी थिंक कि वी कैन कवर इट टुडे, एंड उस हिसाब से कल वाले जो एक्शंस है वो आज के हमारे एक्शंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेक श्योर टू ट्रेड इन द नाउ मोमेंट। उसके बाद हमारा सेवन्थ पॉइंट है कि some days your strategy is going to work and someday it's not going to work। बेसिकली किसी दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करेगी, किसी दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो जिस दिन हमारी स्ट्रैटेजी काम करती है उस दिन हमें इतना प्रॉफिट करना है ताकि जिस दिन हम लॉस करें उस दिन का लॉस हमारा ऑफसेट हो जाए। ओके, व्हाट्सअप फैजल, हाउ आर यू? तो दे यू गो। एंड उसके बाद ही हमारा साइजिंग नोट कार्ड है। बेसिकली दिस वीक वी आर गोइंग टू बी रिस्किंग अबाउट 1% पर ट्रेड। ओके, लास्ट वीक we risk about 0.75, so this week naturally we are going to be risking about 1.00% per trade. Okay, so yeah, so let's just see what happens in the market today. We have no plan to trade until we see a good setup, because today is Monday and there is no news today, so market will be pretty streamlined. ठीक है, तो आर्ग्यूबली यहाँ पर एक सेटअप था व्हेन दिस कैंडल स्टार्ट टू ब्रेक दिस हाई। वी हैड दिस सेटअप बट वी वर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो वी डिडंट टुक इट। तो या लेट्स जस्ट सी हाउ टुडे इज गोइंग टू प्ले आउट। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन द स्ट्रीम, ask me on the chat, and yeah, that is it for the top down analysis and our trade write up. And please manage your money right, manage your losses right, and manage your trade right, and stick with your probabilities. All right. What's up Fazal? Last Friday कैसा था तुम्हारा, बताओ? How much you traded, how did you trade it, and what was the number one mistake you did last week? On Friday, the one you sent. Okay, so for gold, let's just see what it is, what gold is doing. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पुराना एनालिसिस है उसे डिलीट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी 30 मिनट वाली सेशन लाइंस हैं उन्हें मैं प्रोजेक्ट कर लूँगा आज के लिए। दे यू go, okay, and इसे ब्रेक डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन वीकली यू विल सी मार्केट हैज टेकन सम काइंड ऑफ सपोर्ट, बट ओवरऑल इट इज स्टिल बेयरिश ऑन वीकली, एंड वी हैव क्रिएटेड दिस रेजिस्टेंस राइट हियर, एंड वी हैव सपोर्ट मेड राइट हियर, ठीक है। एंड इफ दिस ब्रेक्स वी कैन गो टू दिस एरिया राइट हियर 1932, एंड इसे अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे डेली के चार्ट में तो वी हैव क्रिएटेड दिस सपोर्ट राइट हियर,
and we have a resistance made right here, and we have created a fresh support right here. इसे further breakdown करेंगे 4 घंटे के चार्ट में, तो market seems to be bullish, somewhat bullish, and we have created this resistance right here, but I think it is rejecting from a really good resistance, which is this resistance right here, this area. So this can totally turn to the opposite side, and we can see this area right here. So I'm going to break it down on 1 more hour, but उससे पहले we shall mark this right here. Okay, इसे 1 hour के चार्ट में देखेंगे तो we have created a fresh support right here. इसे और further breakdown करेंगे तो we get this right here. तो I think for buy side on gold, we do not have like a clear picture at the moment, but if we see a fresh resistance breaks, we can take buy till this area right here. Okay, and this can be a sell below level. So if I see prices breaking below this level, I'll look for sell to target this right here. Okay, फैजल ने ट्रेड लिया है गोल्ड में, गोल्ड बाइस, एंड आई थिंक इट totally a right trade, because recently we are starting to close above this resistance right here, and we have a clean structure to this area right here, and we have this area right here. So this can be a good target for scalpers. Okay, this right here, 2036.349. So for me personally, I want one more resistance to be made before entering this trade. So if I see a pullback on 15-minute chart, and if that pullback start to break, I will be interested in taking buys. But so far, I don't think I have a trade from my playbook, according to my playbook. What is your entry, Fazal? Let us know. कहाँ से enter किया है तुमने? After this candle closed, or what was your thinking behind it? Okay, so on EURUSD we have closed on 15-minute, and you will see ki we had a lot of volume right here on this candle, but I think there is uncertainty. I'll rather wait for a confirmed setup than taking this setup. Okay, तो फैजल ने चार्ट भेजा है, लेट्स सी. Okay, awesome trade. This one, of course, market is in bullish trend. We have created a support, then we created a resistance, and when price start to break above this area right here, and this was a buy, this was a clean buy. So congratulations Fazal on taking this trade. And I think अगर तुम अपनी ट्रेड में साइज बढ़ाना मास्टर कर लिया ना, तो you can totally kill this market, like totally. Because तुम्हारा जो strategy है, जो तुम्हारी price action strategy है, you capture really good move, and if somehow you start to increase on your winning trades, you can just totally crush the gold market. तो वंस तुम्हारे अंदर एक हारमनी बिल्ड हो जाती है, ट्राई टू थिंक कि तुम किस पॉइंट्स में अपना साइज बढ़ा सकते हो ऑन विनिंग ट्रेड्स, राइट? तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ डू यू डेवलप ओवर द टाइम.
Yeah, totally. It is totally fine to trade one or two pairs. I personally मैं सिर्फ दो पेयर ट्रेड करता हूँ. One of them is gold and one of them is euro USD. It totally depends upon the market condition. Mostly मेरा जो ज़्यादा फोकस होता है वो होता है यूरो यूएसडी की तरफ, बिकॉज हम यूरोप सेशन में ट्रेड करते हैं, चूँकि लंदन सेशन यूरोप सेशन एक ही बात होती है, तो हम वहाँ ट्रेड करते हैं. इसलिए मेरा जो ज़्यादा फोकस होता है वो होता है यूरो की तरफ. एंड अगर मैं जब न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर रहा हूँ तब आई गिव मोर फोकस टू गोल्ड rather देन यूरो. एंड इट इज़ टोटली फाइन टू ट्रेड 1 to 2 pairs. स्पेशली अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है. वैसे अगर तुम एक स्कैल्पर हो या फिर मूव टू मूव ट्रेड करते हो, यानी कि जैसे एग्जांपल, जैसे कि दिस इज़ अ मूव, दिस इज़ अ मूव, इफ़ यू ट्रेड मूव टू मूव, देन चूजिंग 1 to 2 पेयर इज़ टोटली फाइन. बट अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो जो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है, देन हैविंग मल्टीपल पेयर्स कैन टोटली हेल्प यू. मैंने सब कुछ ट्राई कर चुका है. तो इन द पास्ट आई यूज टू लुक एट ऑल द ट्रेड्स. लेट मी जस्ट शो यू. आई यूज टू लुक ऑल दिस पेयर्स and I used to swing trade, but that really didn't work out for me. So right now, these days, I do move to move trades on Euro USD and on gold. Congratulations, Ansh, on completing your book, Trading in the Zone. Uh, if you feel comfortable, please share 3 lessons which you learned from this book right here in the chat. Okay, like the 3 important lessons जो तुम्हें बुक में से समझ आए. And if you have already read that book, it's time to start. Best loser wins. This one right here. That is if you have finished the Trading in the Zone book. Okay, my week was going really good actually, but I messed up in the Friday. I almost lost all the profit I made from Monday to Thursday, and on the weekend I lost all the profit on these 2 trades particularly. आई थिंक ये वाली ट्रेड को मैं ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ, बट बिकॉज दिस वॉज टोटली बेस्ड ऑन इम्पल्सिव decisions. And this was the previous trade, this was fine because of course I lost it, but I followed my playbook on this trade. But on this trade I just took this trade on impulse and I lost it. Market punished me for it and I lost the profit of this trade right here, this trade right here, and this trade right here on these 2 trades. Totally messed up. And I was entering with a lot of size on these 2 particular trade. So market punished me really good for these 2 trades. And I think I'm grateful for these 2 trades I lost because not yesterday, on the Saturday we did a lot of practice again. I think मुझे practice हर 3 months में practice करना चाहिए my strategy and my एंट्री स्ट्रैटेजी. जो मेरा ट्रिगर है वो मुझे हर एटलीस्ट 3 मंथ में प्रैक्टिस करना चाहिए, बट आई डोंट रियली डू दैट. तो आई एम ग्लैड कि जो फ्राइडे के दिन एस एल हुआ, इट फोर्स्ड मी टू प्रैक्टिस माई स्ट्रैटेजी ऑन सैटरडे एंड संडे. तो या दैट इज़ अ पॉजिटिव ऑफ दोज 2 ट्रेड्स.
Yeah, totally. Okay, तो द जीलॉट ऑल्सो नोन एज अंश ने रिसेंटली ट्रेडिंग इन द जोन बुक को कंप्लीट किया है एंड ही इज शेयरिंग सम लेसन्स. लेट मी रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नंबर वन लेसन है वो है डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, जो कि हमारा फर्स्ट रूल है. एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एंड मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन मत लगा के रखो. एंड द सेकेंड इज़ फुल्ली एक्सेप्ट योर रिस्क. फुल्ली एक्सेप्ट योर रिस्क का मतलब एक ये भी है कि पहले से अपना जो रिस्क है उसको प्रीडिफाइन करो, ताकि अगर तुम्हारा जब स्टॉप लॉस होता है तो तुम मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाओ. ओके. एंड जो थर्ड लेसन है जो अंश ने हमारे साथ शेयर किया है वो है डोंट हेजिटेट फ्रॉम टेकिंग दैट अनदर ट्रेड जस्ट बिकॉज यू लॉस्ट द लास्ट ट्रेड. आई टोटली अग्री विद दिस वन. एंड this is basically the third rule, and now let's talk about that more in the details. For example, let's just say you have a setup where you buy like a falling knife. Okay, and let's just take a structure like this. Okay, and you decided to buy the market right here, and तुम्हारी probability let's just say है like 10 में से 6 बार, and you started to buy here and you lost a trade right here. Your stop loss was right here and you lost a trade right here. Let's just say you took a long here, you targeted somewhere here, your stop loss was here and you lost a trade. Then you saw market is going up again, you opened one more trade right here and you decided ki you are going to target the same right here, but again your stop loss just happened. Okay. And when you saw market was going up again, but right here you did not open the trade because of fear of losing more. I think recently मैंने कुछ नोट्स बनाए थे. आई वॉज लाइक जो डॉक्टर डेविड पॉल है उसका सेमिनार मैं देख रहा था, तो उसमें ही टॉक्स अबाउट fear of being wrong is the number one fear in the market. उसके बाद the second thing is fear of losing money. उसके बाद वी हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट. ऑफ कोर्स अगर कोई मूव पॉजिटिव जा रहा है एंड यू आर नॉट ऑन दैट मूव, यू हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड उसके बाद जो फोर्थ फियर है वो है फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल. मतलब कभी कभी क्या होता है, हम ट्रेड में हमारी एंट्री काफ़ी अच्छी होती है एंड हम काफ़ी जल्दी टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, उसके बाद वी लीव लॉट्स ऑफ मनी ऑन द टेबल एंड हमें वो साइकोलॉजी काफ़ी डिस्टर्ब करता है. Yeah, I totally understand, Faisal. So this is what the third lesson, which is what the Ansh shared with us. Ki we have to take that third trade to gain profit. And let me just read it again. Don't hesitate from taking another trade just because you lost the last trade. इसको सम अप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वेन एवर यू ट्रेड, जो तुम्हारी लास्ट 2 ट्रेड्स है ना, उनका सम तुम्हारा करंट कॉन्फिडेंट लेवल बताता है. नो मैटर अगर तुम एक बिगनर ट्रेडर हो या फिर एक प्रो ट्रेडर हो या एक इमर्जिंग लर्निंग ट्रेडर हो, जो लास्ट 2 ट्रेड है उनका सम तुम्हारा करंट कॉन्फिडेंस बताता है. ऑफ कोर्स ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. बट whenever you lose past 2 or 3 trades, you have immense amount of pressure in your head कि यार I'm going to be losing more, and that's the fear of being wrong and fear of losing money, both simultaneously hitting you. दोनों मिलकर तुम पर गोलियां चला रहे हैं, and that's why it is really important to stick with your probabilities. लेकिन when you see जो हमारा फोर्थ रूल है वो इसी प्रिंसिपल में बेस्ड है. द मोर यू लूज प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इंक्रीजेस. ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% थी, तो इस पॉइंट में मेरी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो हो गई अराउंड 70%, एंड करेक्ट दिस पॉइंट पे इट केम आउट टू बी अराउंड लेट्स जस्ट से 80 to 85%. तो अगर एज सून एज योर ट्रेड is hitting your criterias, all the criteria you set for the current trade, you should take this trade and hit the button. Yeah, totally. That's the reason we keep the journaling thing. If you want me to share the current journal I used to track my trades, I can share that on the group.
and if you are not the part of the group yet, please consider joining our Sam FX chat group. वैसे तो काफ़ी छोटा है अभी, but we will definitely grow one day more and more. There I will share my current stats. ठीक है? Yeah, I know Faisal, you are there, and thank you so much for joining. So that's the thing. And अगर आज तुम्हारे पास कुछ टाइम बचता है guys, let me recommend this video right here. This video right here, Dr. David Paul, Trading Psychology. I think this is a really good video. Yeah, he talks about how do you develop a thinking, how do you develop discipline. And yes, Faisal, I listen to TED Talks, mostly self-improvement ones, but I recently come across this trader Tom, जो कि बेस्ट लूजर विंस है, उसका ऑथर है, एंड उसका एक यूट्यूब चैनल भी है. तो मैं यूँ ही सर्फ कर रहा था ना, आई सॉ दिस वीडियो, डॉक्टर डेविड पॉल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी. आई थिंक दिस इज़ really good video. You should really definitely like watch it. ओके, यहाँ पर जो डॉक्टर पॉल है वो एक बार में एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में बात करता है, विच इज़ एक तो है कि डबल डाउन ऑन योर साइज व्हेन यू आर विनिंग. दैट्स द थिंग. एंड द अदर थिंग इज़ हाउ टू बिल्ड ट्रेडिंग डिसिप्लिन, एंड दैट रियली हिट मी. बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू टू build a trading discipline. Yeah, totally watch this. तो हाउ डू यू रियली डेवलप लाइक ट्रेडिंग डिसिप्लिन. लाइक ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ द जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ, एंड इवन सम ऑफ द प्रो ट्रेडर्स दे स्टार्ट टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी बट दे डोंट रियली टेस्ट द स्ट्रैटेजी. तो उसके लिए क्या उन्होंने हैक बताया था कि नंबर वन थिंग यू हैव टू डू कि सबसे पहले एक ऐसी स्ट्रैटेजी को फिक्स करो जो तुम्हें एंट्री लेवल दे, तुम्हारा स्टॉप लॉस दे, तुम्हारा टीपी नहीं भी दिया तो चलता बट उसका तुम रेशो से फिगर आउट कर सकते हो. एंड दूसरा है कि तुम्हारा पोजीशन साइज दे. दैट वाज द नंबर वन थिंग. ठीक है. उसके बाद जो नंबर टू थिंग जो नंबर टू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो है कि प्रैक्टिस दोस ट्रेड ऑन 30 ट्रेड्स. ठीक है. अगर तुम एक स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली 30 टाइम्स फॉलो करते हो, यानी 30 बार तुम चार्ट में आके उसे एग्जीक्यूट करते हो, तो धीरे धीरे जो तुम्हारा डिसिप्लिन है वो अपने आप ही मेंटेन होने लगेगा. एंड जब तुम लेट्स से 15 या 16वीं ट्रेड तक पहुंचोगे, यू विल रियलाइज़ कि यू विल सी कि यू हैव इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली. बट द थिंग इज़ 90% ऑफ द ट्रेडर्स वोंट इवन गोइंग टू फॉलो इट विद द प्रिसीजन. मतलब लेट्स जस्ट से कि किसी ने स्ट्रैटेजी को फिगर आउट कर भी लिया कि ठीक है, आई एम गोइंग टू बी फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, बट वो उसे कंसिस्टेंटली 30 टाइम्स वोंट बी एबल टू फॉलो इट अराउंड. लेट्स जस्ट से कि मोस्टली 10 में से हार्डली 3 या 4 लोग उसे फॉलो करेंगे. तो व्हाट यू हैव टू डू टू बिल्ड ट्रेडिंग डिसिप्लिन इज़ बेसिकली टेक अ स्ट्रैटेजी जो तुम्हें क्लियर स्टॉप लॉस दे, क्लियर एंट्री पॉइंट दे, एंड क्लियर जो तुम्हारा ट्रेडिंग साइज है वो दे, एंड तुम्हें उसे फॉलो करना है फॉर 30 टाइम्स विथ ऑफकोर्स एक्टिव फीडबैक टू योर सेल्फ. बट जो मैकेनिकल सिस्टम है जो तुम्हें स्टॉप लॉस दे रहा है, जो तुम्हें एंट्री पॉइंट देना है, जो तुम्हें पोजीशन साइज दे रहा है, उसको फॉलो करो विदाउट इंटरफियरिंग. या तो एंड जब तुम अपनी 14वीं ट्रेड में होंगे, 15वीं ट्रेड में होंगे, तब यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार थोड़ा डिसिप्लिन आ तो रहा है. तो या दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद फिर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी उन्होंने. बेसिकली व्हेन एवर यू पुट ऑन अ ट्रेड, उससे पहले try to take deep breaths, not 1 or 2, take 11 deep breaths before entering a trade to deal with FOMO. So when you do that, you will see how your fear of missing out getting evaporated. Okay, so whenever you take a trade, try to breathe for 11 times. Okay.
या दैट्स द थिंग, बिकॉज सिमुलेशन में आई डोंट थिंक सो कि हमारी साइकोलॉजी उतनी ज़्यादा इवॉल्व होती है, वी आर नॉट रिस्किंग एनीथिंग। बट सिमुलेशन से आई कैन टोटली से कि जो तुम्हारी एंट्री है वो काफ़ी प्रिसाइज हो जाएगी व्हेन यू ट्रेड लाइव, एंड कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो फैज़ल ने कमेंट किया है, दैट वाज अ वैल्यूबल टीचिंग बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन माय ओन द कॉमन प्रॉब्लम आई फेस्ड इज़ वेयर शुड माय स्टॉप लॉस, वेयर शुड माय टीपी एंड वेयर शुड माय एंट्री इज़। एंड आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स लोग होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम तो सेव फेस करते हैं, बट द थिंग इज़ वो इसी प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। कई लोग तो 10-10 20-20 साल तक यही फिगर आउट नहीं कर पाते कि उनको एक स्ट्रैटेजी से स्टिक रहना है। ईच टाइम उनका स्टॉप लॉस होता है, वो हंटिंग में चले जाते हैं कि इसमें मैं और कौन सा इंडिकेटर यूज़ करूँ, इसमें मैं कौन सा और रिफाइनमेंट करूँ, एंड और कौन सी स्ट्रैटेजी को मैं इसमें यूज़ करूँ। बट जो स्ट्रैटेजी को चूज़ करना, इट इज़ लाइक the least important thing. The most important thing is sticking with it. तो कोई भी स्ट्रैटेजी को चूज़ करो जो एक मैकेनिकल स्ट्रैटेजी हो एंड कंसिस्टेंटली तुम्हें तीन चीज़ें दे, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट एंड तुम्हारा जो टेक प्रॉफिट लेवल है वो। एंड दूसरी बात कि जो तुम्हारी ट्रेडिंग साइज़ है उसको उससे डील कर सके, दैट इज़ इट, एंड यू नीड नथिंग एल्स। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, जो हमने कल प्लेबुक करी थी ट्रेड, उसका एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट? जो करंट प्राइस एक्शन है ना, उसी से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर गो, एडिंग टू अ विनिंग पोजीशन, जो हमारा कल की स्ट्रीम का टाइटल था। तो जो हमारी विनिंग पोजीशन होती है ना, उसमें ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका है, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से दिस वाज माय ट्रिगर, ओके, दिस वाज माय ट्रिगर राइट हियर। Yeah, yes, Ansh, that's the point. So this could have been our trigger, and let's just say I have took this trade, and this would be my stop loss based on ATR value right here. This will be my stop loss, and this is my original position from here, and I was targeting this area right here. मतलब एक hypothetical example बता रहा हूँ, we missed this trade actually, but let me just say कि हमने सैटरडे के दिन क्या प्रैक्टिस किया था, ठीक है? तो let's just say I took my initial entry right here at this point, and this is my entry one. Let me just mark this as my entry one. Entry one, ठीक है? And this right here is my stop loss for entry one. ठीक है? And after practicing all of this, what I figured कि how can I improve the trading size when I'm in a winning trade. This was the question, this was my number one question, and I was looking for an answer. So after practicing I realized कि once I go positive right here, let me just tell you with example. This is my entry and this is my stop loss for my first position, ठीक है? And उसके बाद when my position is running at the profit and I have a candle closure below above prior buys high, like this candle right here is closing above prior buys high, and I have a lot of volume in the market. This is the most important criteria, and I have a lot of volume in the market just like this, ठीक है? इसके लिए कैंडल की बॉडी, यू नीड कैंडल की बॉडी काफ़ी लाइक थिक हो, लाइक काफ़ी volume हो उस particular body में. And when this happens, all you have to do is open your second position with the same lot. This will be my new entry 2, okay, this will be my entry 2, and जो तुम्हारा stop loss होगा वो होगा 15 मिनट के हिसाब से, and that will be stop loss will be right here at this point, ठीक है?
and this will be my stop loss too, and जो हमारी previous position है that will go into break even, ठीक है, and our original target is like this particular target right here. So basically what we did right here, we increased in our winning position. This is what we figured in our session yesterday, and this is what I'm focusing on right now, कि how can I increase size when I win in the market, ठीक है. So that is what we learned over the weekend, this weekend, कि how can I increase the size on the trade where I win with the market makers. Because of course we are going to face the losing days, that is just inevitable. You are going to have losing days, but when you win, you should win the maximum amount you can on a trade, ताकि जिस दिन तुम्हारा losing day हो, you can offset the loss of the losing day. ठीक है, over here we are looking at the gold, and we have a clean break of this level right here, and I want like a candle closing bearish, and अगर उस candle का high break होने लगता है, I will take this trade for this target right here. तो let's just see कि हमारा लंदन ओपन किस तरह से काम करेगा. Right now we have 20 minutes for London Open. So we are just going to be patient and watch how the market behaves. Over here at the EURUSD, I think market has already reached the target, so there is no point looking for a trade today on EURUSD. So I'll be focusing more on gold for rest of the stream, and we'll close the stream at 2 p.m. Okay. So yeah, what I'm going to do right here, I think I'll take a screenshot of this and I'll post it, and I'll take a screenshot right here and I'll post it in my Evernote. See, this is the playbook. This is the DM, like my market review session from Friday, where I lost 2 trades. See how I like point to point noted down ki what I could have done in the market. Okay. Yeah. I don't have it, but it is really pretty easy. All you have to do is like जब भी तुम open करोगे Evernote, you will see something like this is your basically platform on Evernote, and all you have to do is go to notebook and open a new notebook. यहाँ से you will see the option of new notebook. Because ये एक प्रीमियम नहीं है नोटबुक Evernote का, तुम्हें एक से ज़्यादा नोटबुक बनाने के लिए प्रीमियम लेना होगा, which is quite expensive to be honest. So all you have to do, all you get is like one free notebook, and you can open as many notes as possible. तो let's just say एक note मैं खोल के बताता हूँ. To open a new note, all you have to do is go at new, and you have this right here. उसके बाद तुम इसे टाइटल दे सकते हो कोई भी. let's just say जैसे मैं देता हूँ, let's just write it down, daily review sessions. ठीक है, sessions, there you go. उसके बाद you can write anything. let's just say how can I improve more today. Okay, there you go. उसके बाद if you wanna write down anything details, कि जो भी तुम्हें डिटेल लिखनी है वो लिख सकते हो. About inserting a picture, all you have to do is click right here and copy image, and then you have to paste it right here. ठीक है. The best thing about Evernote is when you click on the image, you will see this right here, this edit and annotate का option आएगा right here. When you click on this option,
you will see a whole image just magnifies, and you can add like arrows here. Let's just see, like you can add arrows here, you can point the thing which is important to you like this. Okay, and you can add text, you can write anything like this. Okay, and you can add box like, okay, this can be my entry, this can be my entry, वगैरह वगैरह. And you get all the like freehand drawing tools, and you can blur the image, like you get every thing. You can crop the image like this, and you can just save it, and यहाँ पे save रहती है. And that is why I use Evernote, because वो image को edit करने का option देता है, and there is like a lot of option, but most of the options are like most of the option जो है वो इसके लिए fixed है, प्रीमियम के लिए. बट जो फ्री वाला है उसमें we only get new book, only one book, and we can create endless number of notes right here. So I think that's why I use Evernote more rather than that Google Note thing. तो ये डेली रिव्यू सेशन के लिए आई थिंक Evernote is really good. Yeah, download कर लो and see what you can do with it. Okay, let's just look at gold. Okay, there you go. It is creating some kind of resistance right here. First of all, we had this support right here, created right here, and ये वाला जो एरिया इसे हमने as level mark करके रखा है. If price to start go below this area, will start to sell the market. But again, market seems to be bullish, and on 30-minute chart we have created this resistance right here, and this was my buy above level. Okay, and this area right here is my highlighted area, and right here is my no trade range. Okay, so on 15-minute chart you will see we have created a fresh resistance right here. So if I see break of this area right here, I'll start to buy again. If this area start to break, I think I'll be interested in taking buys. And if we see bearish candle on 15-minute chart, we will start to manage this trade. ठीक है, तो we can totally test this area. Basically that's the logic with it, because अगर तुम daily में देखोगे तो market is still कहीं ना कहीं market is bullish on daily. On 4 hour market seems to be bullish as well. So this can be a good trade if we start to break above this area right here, this area right here. And I think Fazal is already on this trade, right Fazal? Did you close all of the position, or some of the position is still running? Yeah, that's a nice thing. It totally depends upon you, Ansh. Just ask yourself this question कि अगर तुम एंटर करते हो एंड उसके बाद उसका स्टॉप लॉस होता है, तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगे? अगर उसका आंसर है यस, तो डेफिनेटली टेक अ ट्रेड, एंड अगर उसका आंसर है नो, देन स्किप द डे एंड कॉल इट अ डे एंड कम टुमारो. जस्ट आस्क योरसेल्फ, अगर वो ट्रेड, अगर एक पर्टिकुलर ट्रेड, अगर तुम अभी ट्रेड लेते हो एंड अगर उसका एसएल होता है, तो क्या तुम खुद को फॉरगिव कर पाओगे? दैट्स द क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ. एंड अगर उसका आंसर है यस, डेफिनेटली टेक दिस ट्रेड, एंड इफ नॉट, skip it. Right? Hello, hello, hello.
Okay, hopefully we got the cam again. Yeah, I totally agree with Faisal here. That's the thing. For हाँ, तो मैं कह रहा था, for me personally मुझे थोड़ा सा influenced लग रहा है, like मैं psychology बता रहा हूँ अपनी, because I miss this move right here, this move in particular. I have strong urge to take this trade on gold right here, if only this high start to break. And just because I missed that particular trade earlier on EURUSD, I'm having like really strong urge to take this trade if that high start to break. Exactly, मेरा mind यही बोल रहा है, ले 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 ले. But I think I will just wait for more confirmations. But let's just see. 15 मिनट में हमारा लंदन ओपन होने वाला है. उसके बाद देखते हैं, अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है एंड हमें वॉल्यूम देखता है तो हम ट्रेड लेंगे. ओके, तो फैजल का क्वेश्चन है कि हैव यू ट्राई ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस बिफोर. नो, आई हैव investment in Indian market, but I never trade regularly on Indian market. Basically what we do is buy indexes every month, some amount. वैसे अगर इन्वेस्टिंग में तुम कोई बुक देख रहे हो ना, तो देयर दिस बुक कॉल्ड, एक टोनी रॉबिन्स नाम का ऑथर है ना. ओके, ये अंश मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग की बातें बोल रहा है एट द पॉइंट. या वैसे अगर गाइस तुम्हें इन्वेस्टिंग में एक अच्छी बुक चाहिए ना, तो there's this book called, let me just search it. This right here, Money Master the Game and Unshakable. I think this book right here, if you are looking to learn how to invest in stock market, this is really good book. What is it, Ansh? Okay, you told me to share the gold data, right? Let me just share it to you right now. Yeah, just I'm sending you like right now. आई थिंक मेरे पास नवंबर तक का है.
Yeah, something like that. Yeah, Monday's pretty chill. I think risking more on Monday doesn't make any sense. Okay, there you go. ओके अंश, तो मेरे पास गोल्ड का डेटा है, बट इट इज़ अबाउट 580 MB, लगभग आधी GB का डाटा है. क्या आई अग्री विथ यू अंश. यस यस, जस्ट गिव मी अ मिनट. आई एम सेंडिंग इट राइट नाउ. होपफुली अभी अपलोड हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अभी डाटा है वो इस पे है ना, लाइक अभी स्ट्रीम चालू है ना, तो हो सकता अपलोड काफ़ी स्लो हो. तो मेरे पास गोल्ड का डेटा है. ओके, तो मेरे पास डेटा है 2021 सितंबर से लेके 2023 सितंबर तक. ओके. मेरे पास लाइक काफ़ी ये. तो वैसे तो एक चीज़ और कर सकता है ना, इफ़ यू इंस्टॉल योर अगर तो सिमुलेशन जो सॉफ्टवेयर है, अगर तो इसे इंस्टॉल करेगा ना MT4 में, तो यू कैन टेस्ट योर MT5 डाटा इटसेल्फ, यानी कि तू कल का ही डाटा भी टेस्ट कर सकता है अगर you install it on your MT4 account, that is. Basically जब ऑप्शन आता है ना, या वेर यू गेट द ऑप्शन टू चूज़ द डाटा सोर्स, वहाँ पर ऑप्शन आता है डॉक्स कॉपी, ट्रू एफएक्स और MT5, तो यू हैव टू चूज़ द मेटाडाटा ऑप्शन. What was your experience, Fazil, trading Indian markets? क्रिप्टो तो ट्राई किया है मैंने, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स तो ट्राई किया है, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग नेवर रियली ट्राइड इट ब्रो. Okay, तो London has been opened. First of all, if you look
वॉल्यूम वी हैव अ लॉट ऑफ, नॉट लॉट ऑफ वॉल्यूम बट थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में, विच इज़ ऑफ कोर्स लंदन ओपन में आता ही है मार्केट में. तो या लेट्स जस्ट सी हाउ दिस गोज दो. ओके, तो आई बी स्ट्रीमिंग टिल 2 बिकॉज इट्स मंडे, एंड कल से विल बी स्ट्रीमिंग टिल 3:30. ओके, and we are going to schedule a 24-hour stream soon. Hopefully मार्च की शुरुआत में हम कर सकें. Yeah, I agree with you because I think there is not enough volume, right? And options are so complicated and rigged. I think I agree with you here. Yes, Ansh will do a 24-hour stream जहाँ पे हम 24 और 12 hours I guess जहाँ पे हम एशिया सेशन ट्रेड करेंगे सबसे पहले. वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे जीबीपी जेपीवाई. उसके बाद लंदन सेशन ट्रेड करेंगे जहाँ हम ट्रेड करेंगे यूरो एसडी. एंड लास्ट में यूएस सेशन ट्रेड करेंगे जहाँ पर हम ट्रेड करेंगे गोल्ड. स्टॉक मार्केट मुझे हमेशा से लाइक बिकॉज इतनी गैप्स होती है ना, इट ऑलवेज जस्ट कन्फ्यूजेस मी कि व्हाट्स द राइट थिंग टू डू. एंड अगेन मार्केट इज़ इन ऑल टाइम हाई. So let's try to do a top-down analysis on Nifty right here. We have a most recent high right here. We have a most recent support right here. इसे further break down करेंगे 4 घंटे के चार्ट में. तो it seems like market is bearish. Okay. इसे further break down करेंगे 1 hour के चार्ट में. तो you will see कि we are going down and we have created some kind of support right here. And we have most recent resistance right here. इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में एंड विल सी कि मार्केट इज़ क्रिएटेड सम काइंड ऑफ सपोर्ट राइट हेयर एंड एक रेजिस्टेंस बन रहा है बट अभी एक्टिव नहीं है. इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 15 मिनट के चार्ट में. तो वी हैव क्रिएटेड दिस राइट हेयर एंड इसे और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 5 मिनट के चार्ट में. तो वी हैव क्रिएटेड हाई हेयर, वी हैव क्रिएटेड अ सपोर्ट राइट हेयर एंड करंटली वी आर ब्रेकिंग दिस सपोर्ट राइट हेयर, टाइनी सपोर्ट. So for Nifty 50, if I have to take a sell, I think I'll take a sell if this area start to test again and break its own low. I'll take a sell and this will be my first target and this will be my second target right here. Again guys, we don't trade Nifty, but this is what the analysis is. If अगर मैं trade करता Nifty तो I would trade like this. What's your favorite time frame guys, like जहाँ पर तुम डिसीजन लेते हो? जैसे आई टेक मोस्ट ऑफ माई डिसीजन बेस्ड अपॉन 30 मिनट चार्ट. एंड व्हाट अबाउट यू फैजल, अंश, आकाश? व्हाट आर योर फेवरेट टाइम फ्रेम्स to take decisions? Of course all the time frames are important. It is important to do to have all the time frames in our hindsight, but at what time frame do you guys take decision? Mm-hmm. 1 hour is a really good time frame. I agree with that.
1 hour or 30 minute is a good time frame if you are looking for move to move trades. And if you are on 5 minute chart, it is totally based upon your scalping skills. If you are looking at 5 minute chart, yeah, I agree with Faisal here. I also do the same. I decide my bias based upon daily and 4 hour, and I take my entry based upon 30 minute chart and manage on 15 minute. Okay, I think gold is breaking out right now, and I am facing like fear at the moment to enter this trade, even though there is volume because open हो रहा है अभी market, and daily seems to be bullish. 4 hour is bullish as well. So let's just take this trade. I think I'm going to taking this trade right here at this current point right here, and जो मेरा stop loss है, I'm keeping it at this area right here, and I'm going to be targeting 1:1 with this one. Okay. And about managing this trade, I'll manage this trade based upon 15 minute chart. If I see a bearish candle close with a lot of volume, I'll close about 50% of my position. And about the risk, I'm taking really small risk on this one. तो make sure अगर तुम follow कर रहे हो ये वाली trade तो काफ़ी कम risk रखो. For myself, I'm taking the risk of 0.4% on this particular trade, which is really low. So if you are planning to take this trade, please make sure to follow your money management. I think I'll classify this current trade as A plus A, like a B trade right here, because it is based upon fear, I think. Yeah, that's what I'm thinking too. Okay, so I'm dropping down to 5 minute chart right here. If I see bullish closures on 5 minute chart, and if the trade is winning, I'll increase my position with twice as the size of my original position.
And don't forget to drink water. Okay, chat. And actually, I have a question for you guys. मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा मोनोट्यून साउंड करती है क्या? डू आई साउंड लाइक अ रोबोट इन माई वीडियोज़? लाइक ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि एम आई टॉकिंग लाइक स्क्रिप्ट, और इज इट फील लाइक कि आई एम टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड? लाइक हाउ डज इट साउंड लाइक? एंड जो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की, and just basically rate my English speaking skill, like it is out of 10, how much do you think it is? I think if I had to rate myself on English speaking skill, I will rate myself 3 out of 10. Nah man, it's definitely not 20. I think it is 3, 4, maximum 4. But on my videos, like the videos I upload, the long form videos, there do I sound like a robot there? Like मैं कुछ read कर रहा हूँ इस तरह से sound करते हैं, या फिर it is sounds like कि yeah, I'm genuinely talking like a friend? Yeah, like the recent 1 or 2 videos. I sound like a teacher. अगर like sound like a teacher, is it a good thing or is it a bad thing? Yeah, Ansh, I take inspiration from for my thumbnails from Decoding YT. Thanks, Faisal. That's a compliment, bro. And one last question, like, how are my shorts? I don't know, अगर मेरे short form videos तुम्हारे feed में आए होंगे तो how is it like, उसमें कुछ improvement की ज़रूरत है, या फिर should I stick with that format on short videos? Like let's just see one like this.
एंड इस वाले रेजिस्टेंस पे हमें हमारा सेटअप को प्ले करना चाहिए था rather than considering ये वाला सेटअप। इस तरह की ट्रेड्स एंड टिप्स मैं अपने लाइव स्ट्रीम में शेयर करते रहता हूँ, तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन यूट्यूब। हाउ वी लॉस्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेड ऑन स्ट्रीम टुडे। स्टॉप लॉस होने के बाद हमने इस ट्रेड को रिव्यू भी किया। रुको बताता हूँ। थैंक्स फॉर योर फीडबैक गाइस, मींस अ लॉट टू मी। All right, so gold seems good right now. We have a 3 minute in closing right here. Uh, right now I'm on 5 minute chart and I am looking for where I can enter more position on gold. Right now active position is about 0.4%, which is barely anything. So I'm looking for a point जहाँ पे at least I can enter with 1% of the risk. Hello Deepak Gupta, how are you? Yeah, I've seen that video too, and I also try to include that in my video. खासकर वो जो पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट है ना कि ओके स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। इवन दो पिछले आई थिंक 2-3 हफ्तों से मैंने एक्टिवली वीडियोस नहीं डाला है, बट आई थिंक आई विल डेफिनेटली मेड मोर वीडियोस अपॉन इट। Okay, so yeah, daily is totally flipped right here. We'll see, we got a wick and we have a clean structure to the left hand side till this area right here, which is our 2056 level. On 4-hour chart we are already bullish, on 1-hour chart we are also bullish. Okay, I have one more question actually. So how do you see कि market में volume आ गया है? For me, I use this like built-in indicator on trading view to see if volume is there. But again, ये एक lagging indicator है, तो जब candle close होती है तब पता चलता है कि yeah, there is some kind of volume है. तो how do you interpret कि market में volume आ गया है? Okay, you see market has closed bullish on this particular candle. So if next candle, this is my prior bar, if next candle closes above this candle with a lot of volume, I think I am going to enter one more position on this trade right here with the same lot as my primary position, and we'll see ki how much we made.
Yeah, that's a good idea too. Because I think ना जो वॉल्यूम है वो फॉरेक्स में वॉल्यूम मतलब दिस साइज राइट हियर, दिस, ये उतना मैटर नहीं करता। बिकॉज इफ़ यू सी, अगर तुम सेशन टू सेशन ट्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, यू जस्ट हैव टू कैप्चर द राइट साइड, लाइक राइट हियर सी। तो जितना वॉल्यूम मैटर करता है यू स्टॉक्स में या क्रिप्टो में, आई डोंट थिंक सो कि फॉरेक्स में उतना ज़्यादा मैटर भी करता है। बिकॉज अगर हम सही टाइम में ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑलरेडी टोटली जस्ट फॉल्स इन प्लेस। तुम्हारा क्या थॉट्स है इस बारे में? Yeah, it is. But I think yeah, I agree with you, Faisal. And that's why I have set myself like, इसलिए मैंने भी लाइक टाइमिंग सेट कर ली कि ठीक है इतना से इतना हमें ट्रेड करना है, इतने बजे से इतने बजे मुझे ट्रेड करना है। ओके, तो वी आर ब्रेकिंग प्रीवियस कैंडल्स हाई, and if we closed bullish with a good amount of volume and little to no wick, I think then I will increase one more trade, one more lot on this particular trade. And please consider liking the stream, guys, if you're watching right now. Yeah. Here I think Fazal have a point. See, because अगर चार्ट में हम ज़्यादा देर रहो ना, चार्ट स्टार्ट टू इन्फ्लुएंस अस, मतलब हम चार्ट जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं ना, हम उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना धुंधला हो जाता है। Okay, so we have around 1 minute to close. Okay, I think I'm going to be moving my stop loss to this point right here, everyone. And I'll be opening one more position with the same lot, but based on 15-minute chart. Okay. ओके, तो आई हैव ओपन वन मोर पोजीशन, एंड जो प्रीवियस पोजीशन है उसको मैं ब्रेक इवन पे ला, नॉट ब्रेक इवन, अराउंड 2034 पर ला लिया है जो ओरिजिनल पोजीशन है, एंड आई हैव एडेड वन मोर पोजीशन विद द सेम लॉट एज माय प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, द रीजनिंग बिहाइंड इट इज़ रियली सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ विनर ट्रेड, तो मैंने अपना सेलर से मूव कर लिया है टू दिस पॉइंट राइट हियर, दिस 2034। ओके, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है राइट हियर। एंड जो मेरी नेक्स्ट ट्रेड है उसको मैंने ओपन किया है ठीक इस पॉइंट पर,
ठीक है इस पॉइंट पर, राइट हेयर, एंड इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा है ठीक, लेट मी जस्ट सी, स्टॉप लॉस मैंने रखा है 2032.65, 2032.65, there you go. So there you go, I have two open position at the moment. ओके तो हमने प्रैक्टिस किया था ऑन सैटरडे कि हाउ टू ऐड ऑन अ विनिंग पोजीशन, तो दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ. जो प्रीवियस दो कैंडल है इट क्लोज बुलिश विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड द प्रायर कैंडल हैज़ अ मोर वॉल्यूम देन द प्रीवियस कैंडल. तो आई ओपन दिस ट्रेड बेस्ड अपॉन दिस एनालिसिस, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है उसे मैंने मॉडिफाई किया है टू दिस लेवल राइट है, एंड जो मेरा एंड एक नई पोजीशन ओपन की है बेस्ड अपॉन 15 मिनट चार्ट, एंड जो उसका स्टॉप लॉस रखा है मैंने ठीक यहाँ पर. तो इफ़ वी विन ऑन दिस पोजीशन वी आर गोइंग टू बी विनिंग ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच वी रिस्क्ड. ऑलराइट, तो लेट्स जस्ट सी इफ दिस वन इज़ गोइंग टू प्ले आउट और नॉट, एंड अगर ये दोनों ट्रेड का स्टॉप लॉस हो जाता है तो विल बी क्लोजिंग द ट्रेड एंड विल सी यू टुमारो एंड सेम स्टफ अगेन. Thank you, Ansh, for your comment. Yeah, that's the thing. जैसे क्या लिखा है, people are saying gold can't push further because USD is strong. I think the when people say कि yeah this is going to happen and this that going to happen, I don't think so कि उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, you know, because nobody can know where the market is going. जैसे वो मूवी में बोलता है, which movie that is, Wolf of the Wall Street, किसी ने देखी है Wolf of the Wall Street? Yeah, वो बोलता है ना everything is just fake, everything is just fugazi. That's the thing. Everything is fake in the market. So we have to build the certainty in our probabilities. Okay, so it is almost 2 o'clock. तो वैसे तो हम 2 बजे स्ट्रीम बंद करने वाले थे, but let's continue till 2:30 and then we'll see you tomorrow at the same time, and we will stream from 12:30 to 2:30. Okay, seems like there is a lot of volume in the market. Yeah, so far it's a W trade, but it can turn into a loser pretty quick. So let's just wait and see how this one is going to play out. तो there are two things happened in this trade. First of all, हमने एक पोजीशन ओपन की एट ओरिजिनल पोजीशन, जो कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी बेस्ड अपॉन 30 मिनट चार्ट, एंड उसके बाद बेस्ड अपॉन 5 मिनट चार्ट वी इंक्रीज्ड दिस पोजीशन, एंड राइट नाउ वी आर सीइंग कि हाउ दिस वन इज गोइंग टू प्ले आउट.
Congratulations, Fazal. Congratulations, congratulations, Ansh. I think I will hold on to this trade. If I see 5 minute structure break, I'll close this trade. Yeah, that's a good thing. I think I'm really impressed with how Fazal trades, because he follows like the basic rules of trading. First of all, probabilities पे believe रखना. Second of all, कि अपना जो रिस्क है उसे पहले से डिफाइन करना, एंड उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से टेक प्रॉफिट लेना. तो या आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद फैजल एंड आई थिंक ही कैन इम्प्रूव मोर. And Ansh is also trading really well. Okay, so we are still holding the position and currently we are running at around okay, so currently I'm running for about 21 pips and I'm going to let this one run. Let's just see until we see a 5 minute structure break. Dude, Ansh, never let me tell you advice, one really good advice. First of all, you are your number one friend. ठीक है? ये advice, I have a friend named he's a doctor, he's a dentist. उन्होंने मुझे advice दी थी कि never bad mouth yourself. मतलब you are your number one friend, तो basically there is never really say कि like खुद को negative self talk कभी मत करो. I know you are not doing the self talk, but I'm just like giving the advice. So whenever if you lose a trade, whenever you do a massive loss, just say to yourself कि I forgive myself for this action which happened and I won't repeat that, basically, because you are your number one friend. Everyone is going to just badmouth you, तो तुम खुद को ही क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो, बेसिकली ये मेरे कहने का मतलब है. तो यू आर योर नंबर वन फ्रेंड, तो कभी भी खुद को डिमोटिवेट मत करो एंड कभी भी खुद को ब्लेम मत करो कि दिस हैपेंड और दैट हैपेंड. ओके, देयर यू गो. सो लेट्स जस्ट से कि जैसे कि मेरी यहाँ पे ट्रेड रनिंग है एंड आई एम रनिंग एट अराउंड 21 पिप इन प्रॉफिट, but market flips and I lose it all. I won't say to myself ki shit, I had the opportunity to take like 21 and pip on this particular trade and I lost it all, like मेरा stop loss हो गया. तो it is kind of really like उससे खुद की सेल्फ इमेज है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है. तो या नेवर बैड माउथ योरसेल्फ, उसके लिए बाकी दुनिया पड़ी है. या एक्चुअली अच्छा हुआ तूने ये कहा अभी. एक्चुअली आई एम थिंकिंग आई एम लिविंग मनी इन द टेबल एट द मोमेंट. I was running for 21 pip in the profit, but right now I'm almost come to break even.
and I'm having urges to close the trade right now, to be honest, and गेटिंग आउट एट द ब्रेक इवन, बिकॉज हमारी जो प्रीवियस दो ट्रेडें थी वो उनका स्टॉप लॉस हुआ था. तो आई एम हैविंग अर्जेस टू क्लोज दिस ट्रेड राइट हेयर एंड टेक वट एवर आई एम गेटिंग अबाउट 7 pips एट दिस पॉइंट. बट अगर मैं अभी क्लोज करता हूँ तो कहीं ना कहीं आई विल लूज़ अ बैटल टू माई सेल्फ. तो आई जस्ट होल्ड ऑन टू दिस ट्रेड until my stop loss happens, or if I see a 5 minute structure break. These are the two things I'm thinking about right now. So even though अगर इस ट्रेड का स्टॉप लॉस होता है, but it depends now. I somewhat agree with you, Ansh. When you know that the market is uncertain, हमें पता है of course market is uncertain and it is giving something, so don't you think it is better to take what market is giving you? It's totally I agree with you, but if like in long term, if you see, this thinking will make you loss. And to be honest, I was taking few pips every now and then, or like 3 months prior, and देर वॉज अ मोमेंट जब एक ट्रेड आती थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसिव लॉस हो रहा था. एंड जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज किया एंड उसे पिन पॉइंट किया, तो दैट वाज द मिस्टेक. Although my win rate was like 78%, but when I was taking the profit, I was like taking very few pips. But and when I was winning and when I was losing, I was losing a lot. So I'll rather lose a trade rather than uh, taking small profit. And उसके बाद लास्ट में जब मंथ एंड होगा, आई ट्राई टू एनालाइज कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में क्या गलती हो रही है एंड आई ट्राई टू फिक्स दैट. तो दैट्स द प्लान एंड लेट्स जस्ट सी this how this goes for this month particularly. Okay, so I'll be closing the stream at 2:30 and I'll update this trade on our Telegram group. If you haven't joined the Telegram group, guys, let me just post the link. Yeah, I understand. And again, it totally comes down to what works for you. And if that is working for you, then you should take regular profits. Okay, guys, I think our original position is going to get stopped out. Yeah, we are out of the original position for about
Let me just count it. Uh, 10 pips, matlab I lost about 0.05% on that particular trade because it was almost at break even, and जो current position है it is running. So let's just see how this one is going to play. All right man, congratulations on your trade today, and make sure कि तुम अपने trade को journal कर रहे हो. Okay, make sure you're marking your trades, make sure you're journaling your trade. Yeah. Okay, so update on our trade. Our original position has been out on almost break even, and one position is still running on gold. So let's see how it's going to play out. I'm going to be holding this trade until US opens, and तब तक अगर profit हमें नहीं होता है तो I'll close this trade on loss, और जब तक loss ना हो जाए. Okay, so we are here till 2:30, which is after 15 minutes. We are going to be closing the stream. So if you have any question, you can just definitely feel free to ask it, and if I can, I shall answer them. And all the very best for US session if you are going to trade the US session. All right. Okay, so I'm turning off the camera at the moment, but I am here till 2:30. तो अगर कोई भी question आता है तो feel free to ask me, all right, and we shall answer them.
Okay, so currently this is a DAX chart actually. We don't really trade DAX or anything, but I am like testing my strategy on DAX, so that's why I'm doing the top down analysis right here on DAX. Okay, तो आकाश ने चार्ट भेजा है. Let's look into your chart, आकाश. Okay, तो आकाश ने चार्ट भेजा है. Let's look into it. And it is based upon 1 minute chart. I think this is a really good trade, Akash. First of all, your first trade was really on point, really good. Congratulations. And I think second trade was good as well. But make sure you are taking your profit right, okay? And I think हमारा stop loss हुआ है क्या? No, yeah. तो हमारी original position का तो stop loss हो गया है, but rest is still running. So let's just see if this is going to be a winner or loser. I'm going to be updating this position on our Telegram group. So make sure to join our Telegram group, okay? Okay, so I was doing top-down analysis on DAX. Congratulations on your trading, Akash. I think you are improving every day. So you are doing really good. Keep up this pace, okay? And please, जब भी तुम एक winning trade में होते हो तो don't let your confidence run much. Remember, हर winning trade के बाद losing trade के आने के chances बढ़ जाते हैं. तो make sure you are following that, okay? बट 1 minute चार्ट को ट्रेड करना इज़ हाईली रिस्की टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक कम से कम तुम्हें 5 minute चार्ट पे अपनी एक्सपर्टीज़ लाना चाहिए. बट जो भी तुम्हारे लिए काम करता है कीप स्टिकिंग विद इट एंड मेक श्योर कि तुम उसे टाइमली इम्प्रूव कर रहे हो, ओके? नहीं अंश, हमने वो बुक तो रीड नहीं की है, बट इट इज़ नेक्स्ट इन आर रीडिंग लिस्ट. तो जैसे ही मैं बेस्ट लूज़र विंस को ख़त्म करता हूँ मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा. जैसे ही मैं बेस्ट लूज़र विंस को ख़त्म करता हूँ मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा एंड उसके बाद विल डिसाइड नेक्स्ट बुक. आई थिंक द डिसिप्लिन ट्रेडर विल बी good to go. So once I finish this I will make a video upon it and उसके बाद we will do our next book. I agree with you Akash, scalping का अलग ही मज़ा है but it is highly risky as well. तो अगर तुम scalp कर रहे हो तो make sure you are following your money management. You are risking the amount you can afford to lose on that particular trade, and the most important thing, you are accepting the risk on that particular trade. मतलब अगर तुम्हारा stop loss होता है तो तुम्हारी psychology बिल्कुल भी disturb नहीं होना चाहिए, okay? Okay Akash.
वाओ, आई थिंक दैट इज़ रियली, आई थिंक जो स्कैल्पिंग करने के लिए ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, बिकॉज डिसीजन काफ़ी फास्ट लेने होते हैं ना। तो अगर ज़्यादा पोजीशन बड़ी रनिंग है तो इट जस्ट रियली डिस्टर्ब्स अस। हेलो हेलो हेलो, आई एम एट अ स्कैल्पर टेक्स 50, या एक्चुअली सी 50 ट्रेड्स लेना तो ईजी है, बट उसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है ईच ट्रेड के पीछे, सी कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट। हेलो हेलो, या तो आई थिंक इट इज़ क्वेश्चनेबल दैट ही वॉज रियली प्रॉफिटेबल और नॉट, राइट। ऐसे ही मेरे साथ एक बार हुआ था, एक ग्रुप था, इट वाज बेस्ड ऑन पाकिस्तान, जहाँ पे वहाँ के ट्रेडर्स लोग लाइक काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट करते थे। इट वाज बैक इन 2018 आई गेस। तो वहाँ पर मुझे एक ट्रेडर मिला था, ही वाज लाइक ही यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क ऑन द ट्रेड्स, एंड ही यूज्ड टू टेक लाइक स्मॉल प्रॉफिट एंड यूज्ड टू गेट आउट। तो उसने अपने रिजल्ट पोस्ट किए थे एंड उसने अपना अकाउंट फ्लिप किया था लगभग 2 हफ्तों में। तो दैट वाज रियली एंटाइसिंग टू मी, एंड मैंने उसको अपना आईडी पासवर्ड दिया कि ले भाई तू ट्रेड कर, मेरा अकाउंट डबल कर दे। इट वाज बैक इट वाज बैक व्हेन आई वाज लर्निंग, ठीक है। तो आई गेव हिम माई आईडी, माई पासवर्ड ऑफ माई MT5 अकाउंट, एंड ही स्टार्टेड ट्रेडिंग। फर्स्ट ही मेड अ गुड प्रॉफिट। वो अकाउंट का साइज़ था लगभग 3,500-4,000 डॉलर। तो फर्स्ट ही ट्रेडेड गुड और उसने लगभग 6,500-7,000 डॉलर तक का प्रॉफिट किया था। एंड ऑन फ्राइडे ही लाइक टोटली ब्लोन दैट अकाउंट।
एंड मैं उसको कुछ लाइक अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकता था, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वॉज माई डिसीजन टू गिव हिम माई आईडी पासवर्ड. तो आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन ट्रेडिंग rather than depending upon yourself. Yeah, that was a learning curve for me. Yeah, man, totally real money. बिकॉज उस समय मैं एक लूजिंग स्ट्रीक में था, तो मुझे लाइक ऐसे प्रेशर आ गया था कि इफ़ आई कैन रियली मेक मनी ट्रेडिंग फॉरेक्स और नॉट. दैट्स वाई आई टुक दैट रिस्क एंड टोटली कांड हो गया मेरे साथ. ओके, तो सिम्स लाइक गोल्ड इज़ फॉलिंग गुड एंड राइट नाउ हमारी एक ओरिजिनल पोजीशन था उसका तो स्टॉप लॉस हो गया है. एंड राइट नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ दिस वन इज़ गोइंग टू प्ले आउट और नॉट. एंड अबाउट जर्मन डैक्स जहाँ पे हमने अभी टॉप डाउन एनालिसिस किया था, seems like it is ranging. Okay, so we are going to be closing the stream in about, yeah, totally. Akash is the market maker. Okay, so we are going to be closing the stream in about 1 minute. So if you have any questions, you can just ask me and I shall try to answer them. Or we'll see you tomorrow at the same time, 12:30 every day from Monday to Friday, sometimes Saturday too. So let's just see. And again, thank you everyone for showing up. I really appreciate it. And please consider liking the stream and sub to the channel will be perfect. Yeah, that's a smart move, Akash. तुम आए मार्केट में, तुम्हें अपना प्रॉफिट मिल गया. Now it's time to get out of the market and relax. Right?
हेलो साहिल, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? आई एम गुड। वी टुक ट्रेड। एक ट्रेड तो हमारी ब्रेक इवन में वी आर आउट एंड वन पोजीशन इज स्टिल रनिंग, जिसे मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। एंड इफ़ यू हैवंट जॉइन द ग्रुप, प्लीज़ कंसिडर जॉइनिंग द ग्रुप एंड आई कीप माई ट्रेड्स अपडेटेड देयर। ओके, मैंने जो लिंक है उसको पिन कर रखा है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सारे सब्सक्राइबर का। तो या इफ़ यू वांट टू, यू कैन टोटली जॉइन दैट ग्रुप। Okay, I think we are going to lose this match because of the both are almost the same, brother. प्राइस एक्शन बस जो कुछ कुछ काफ़ी डिटेल में जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है वो काफ़ी डिटेल में जाके एक एक चीज़ को डिनोट करता है, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका उतना फ़ायदा भी होता है। तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ के उसके साथ स्टिक रहो एंड यू विल इवेंचुअली सी योरसेल्फ विनिंग। ओके, तो एंड इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे एंड आई विल आंसर दैट देयर, ओके, ऑन डिटेल्स। विच वन इज़ बेटर इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतने ज़्यादा रिजल्ट दिखेंगे बेसिकली, ठीक है? तो फोकस ऑन लर्निंग एंड डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑन योर सिमुलेशन अकाउंट। ओके, सो अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और तुम्हें 1-on-1 अगर तुम्हें पूछना है तो तुम वहाँ से भी पूछ सकते हो। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द स्ट्रीम गाइस। हमने एक ट्रेड ली थी जो कि ब्रेक इवन में आउट हो गई एंड दूसरी ट्रेड इज़ रनिंग एट ड्रॉ डाउन राइट नाउ। इट्स रनिंग एट 18 पिप ड्रॉ डाउन। आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट आवर एसएल एज वेल। तो yeah, that is it for the stream today. I'll see you tomorrow at the same time. Thank you everyone for showing up.
है।